रीड करो। अभी तक नहीं आई। पढ़ो। सेम स्क्रीन। सेम स्क्रीन। अच्छा आगे। Which of the following is the most appropriate next system in management of this patient? 5-year-old boy brought to the office by a parents after exposure to a child with rash. 2 days ago, the patient had a long day playtime, and a friend who local have low grade fever has a transmissible disease. हाँ ठीक So, है। mm, vesicular rash. The friend and another child who had low grade fever and a harsh systolic. हम्म। 5-year-old boy is brought to the office by his parents after exposure to child with a rash. 2 days ago, the patient had a long day only play date with a friend who had low-grade fever and vesicular rash. Okay, he lives in a home with his mother, father, and 1-year-old brother. Vital signs are within normal. Examination shows skin, ears, and mucous membrane is normal. Elementary of the examination normal. What is the next step? Appropriate step in the management of the patient. Okay. Office by his parents after exposure to child with a rash. Okay. Uh, 2 days ago, the patient had a day-long play date with a friend who had low-grade fever and a vesicular rash. The patient and another child in the neighborhood were subsequently diagnosed with chickenpox. Patient has no symptoms and no medical history. He has only received one dose of varicella vaccine at age 1. क्या अटेम्प्ट करोगी आप? Uh-huh. We are confused. I don't know. Maybe reassurance. मे बी रीअश्योर। बात तो आप सही लग रही है मुझे। साइक्लोवीर नहीं देंगे। चलो रीअश्योर करके देखते हैं क्या होता है। अल्लाह करे रीअश्योर हो जाए हमारा पेशेंट। नहीं हुआ रीअश्योर। Um, इन्वेस्टर वेरिसेला वैक्सीन। अच्छा। वेरिसेला एक्सपोजर। वेरिसेला इम्यून prior infection 2 doses of vaccine। अगर ऑलरेडी बच्चा जो है वो 2 डोजेज उसको हमने पहले, या तो उसको पहले कभी इन्फेक्शन हुआ उसकी खुद की इम्यूनिटी डेवलप हुई है, या उसको 2 डोजेज ऑफ वैक्सीन आपने दिए हुए हैं, तो आप ऑब्जर्व करोगे ओनली। अगर जैसे हमारे पेशेंट को जस्ट ओनली सिंगल डोज दिया हुआ है और उसका लाइफ में फर्स्ट टाइम ये इन्फेक्शन है, पहले उसको कभी इन्फेक्शन नहीं हुआ, अगर hmm. इम्यूनो कॉम्पिटेंट है जैसे हमारा वाला बच्चा था, तो वेरिसेला वैक्सीन लगाओ विद इन 5 days ऑफ एक्सपोजर। अगर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, प्रेग्नेंट है, न्यू बॉर्न है, तो आपने ये करना है कि वेरी जिग नाम की इम्यूनोग्लोबुलिन आते हैं, विद इन 10 days ऑफ आपको एक्सपोजर उसको लगाने। अच्छा। एक्सक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ एज लेस देन 1। एक्सक्लूडिंग प्रेग्नेंट वुमेन एंड, यानी इम्यूनो कॉम्पिटेंट में दो पॉपुलेशन ऐसी हैं जो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हुए भी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होती हैं, जैसे प्रेग्नेंट बच्चा और ऐसा बच्चा जो एज लेस देन 1, यानी आपका क्या बोलते हैं इन्फेंट, लेकिन वो 1 साल से कम का। ठीक है, क्योंकि ये दोनों दिखने में तो इम्यूनो कॉम्पिटेंट होते हैं बट इनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, इस वजह से शायद ये इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड स्टेट में आते हैं। ओके। उसके बाद वैक्सीन न्यूबॉर्न एक्सपोज्ड टू मैटरनल इन्फेक्शन आफ्टर 5 days प्रायर टू 2 days आफ्टर डिलीवरी। न्यूबॉर्न एक्सपोज्ड टू मैटरनल इन्फेक्शन आफ्टर 5 days, आफ्टर 5 days प्रायर टू 2 days आफ्टर डिलीवरी। मतलब ये क्या कह रहे हैं? I don't know.
Newborn exposed to maternal infection from 5 days prior to 2 days after delivery. यानी डिलीवरी हो गई उसके 2 दिन बाद, लेकिन उसके 5 दिन पहले अगर न्यूबॉर्न आपका इन्फेक्टेड हुआ है तो आप उसको इस वाले कैटेगरी में कंसीडर करोगे, उसको वेरिजिक लगाओगे, यानी डिलीवरी से सिंपली 3 दिन पहले। मुझे तो ऐसे समझ आ रहा है। Vaccine is still recommended for greater than 5 days after exposure to prevent future infection, but is not effective as post-exposure prophylaxis. कि वैक्सीन स्टिल रिकमेंडेड है 5 दिन के बाद अगर आपको एक्सपोजर हुआ है तो आप लाइक फ्यूचर इन्फेक्शन प्रिवेंट करो, लेकिन ये पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के तौर पर नहीं होती, काम नहीं आती आपको। समझ आई बात? एक चीज होती है हम लोग पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के लिए लगाते हैं कि इसको इन्फेक्शन ना हो, अगर इसको इन्फेक्शन होना होगा होगा, हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर इन्फेक्शन नहीं होगा। ये वाला जो इन्फेक्शन हुआ इसको आप नहीं प्रिवेंट कर सकते, ये हो गया होगा तो हो गया होगा। जस्ट वैक्सीन इसलिए लगानी है कि इसको फ्यूचर में ना हो, इसका सेकंड डोज पूरा करना है सिंपली। ठीक है आप जागो, नींद से उठो, तुम चाय वाय पियो। ओ आपा, ओ डॉक्टर आपा क्या कर रही हो, जाग जाओ। तुम नींद कर रही हो? না। फिर जवाब क्यों नहीं दे रही um, हैं? थक गई हो? हाँ, little bit. लिटिल बीट, पढ़ो पढ़ो। अच्छा अच्छा, the child has been exposed to varicella zoster. हाँ, 10 questions at least करना पड़ेगी ना। The child has been exposed to varicella zoster, which is spread via contact with vesicular fluid or inhalation of airborne infectious respiratory particle. Acha, varicella zoster is extremely contagious, and up to 90% of susceptible non-immunized develop chicken pox after exposure to an person. Varicella non-immunity is defined by incomplete immunization history, less than two doses of varicella vaccine, and no history of chickenpox. Acha. Post-exposure prophylaxis. Post-exposure prophylaxis indicated in non-immune patient as follow. An immunocompetent children is more than one, as in this case. Post-exposure prophylaxis is live vaccine. The vaccine is ideally given to the exposed individually within 5 days of exposure to help prevent or reduce the severity of infection. Although vaccine is not effective as post-exposure prophylaxis more than 5 days after exposure, it should still recommended to prevent further infection. Acha. So if a patient child is more than 1 year and come within 5 days of infection, then then post-exposure prophylaxis is important. We have to give both, but post-exposure prophylaxis it prevent further transmission. An immunocompromised individual, live virus vaccine are contraindicated due to risks of disseminated infection. Instead of post-exposure prophylaxis, varicella zoster immunoglobulin. As a pregnant woman and non and unit born to mother with active infection also require immunoprophylaxis with varicella zoster G. Newborn period, outside the intermediate newborn period, infant age less than 1 cannot receive the live vaccine. Do not require varicella zoster immunoglobulin because they are relatively low risk for severe disease. Acha. So if the child age is less than 1, then we don't have to give both because the transmission rate is relatively low. Now the मतलब other option. Huh? ठीक है, पढ़ो पढ़ो Matlab, पढ़ो। if the child is more than 1 year and हाँ if he came within 5 days, then we give this vaccine and immunoglobulin. And if the child is less than 1 year, then we don't have to give anything because वो जो infection है वो होगी ना वो auto resolve हो जाएगी. ठीक है। Auto resolve means उसका transmissibility उतना ज्यादा नहीं है. Relatively low risks of transmissibility. That's why we don't have to give anything, neither vaccine or nor immunoglobulin. ठीक है।
अच्छा, and I think after 5 days immunoglobulin का जो importance है वो थोड़ा कम, तो that time I think we should give the just the vaccine Hmm. if more than 5 days. अच्छा, now choice A, prophylactic acyclovir can be given as an adjunct to varicella zoster G in some patient who are immunocompromised, but its use alone is the generally don't perform due to limited proven efficacy. Due to limited proven efficacy, unless varicella zoster immunoglobulin is unavailable. In addition, acyclovir is used to treat active varicella zoster virus infection, fever, vesicular rash in high-risk patients. Adolescent or adult immunocompromised individual. Antiretroviral therapy indicated in this healthy and asymptomatic child. Choice D, reassurance and observation are appropriate for immune children. আচ্ছা, history of chickenpox or received the two dose. Received the two dose. 2 year আচ্ছা, receive the two dose. আচ্ছা, 2 year vaccine series who has been exposed to vaccine. The patient has received only one dose of the vaccine and therefore need for post-exposure prophylaxis. All susceptible non-immune symptomatic healthy patient age 21 varicella zoster varicella exposed should be receive post-exposure prophylaxis and then vaccine within 5 days of exposure. At the risk, patient who cannot receive चली गई स्क्रीन चली गई तीन चली गई. अभी चलिए just this patient has recovered only one dose of the vaccine and therefore need post-exposure prophylaxis. So if the patient come with completion of the 2 doses of vaccine, then we don't have to give anything. Then spontaneously recovered, and I think spontaneously recovered. Acha. Educational objective all susceptible non-immune asymptomatic. All susceptible non-immune asymptomatic healthy patient age 11 months, age more than 1 with varicella suspected. हाँ, चले गए स्क्रीन. अच्छा, let me read from my screen. चली गई स्क्रीन. स्क्रीन तो हाँ, आ बीच रही. बीच में चली जा रही है. I don't know why. आपकी नेट का मसला हो सकता है. पढ़ो पढ़ो. Maybe because heavily raining here. बस यही चक्कर है. पढ़ो पढ़ो. Just give me some time. Acha. Now the education objective also acceptable. Non-immune asymptomatic healthy patient with age more than 1 varicella exposure should receive post-exposure prophylaxis with varicella vaccine within 5 days of exposure. At-risk patient who cannot receive the varicella vaccine, immunocompromised pregnant should receive varicella zoster immunoglobulin instead. Acha. At-risk patient who cannot receive the varicella vaccine, immunocompromised and pregnant, they will take the this immunoglobulin. Hmm. सही सही सही. वेरी गुड. वेरी गुड. ये थोड़ा कम समझ आया मुझे, बट मुझे करना पड़ेगा अपने हिसाब से. मैं इसको फ्री टाइम में पढ़ता हूँ. अच्छा, यहाँ भी हूँ. पर क्या क्या थी? 5 year old boy थी ना? 5 year old boy थी and he has another 1 year old brother. घर घर हाँ, in हाँ, तो this 5 year old boy come within 2 days after vesicular rash. So if anyone come within 5 days, if anyone come, अच्छा, हाँ. if anyone come within 5 days, then we have to give this immunoglobulin. If anyone come within 5 And days, then we have to give. after 5 days, if after 5 days if he come, then immunoglobulin उतना ज़्यादा जरूरी नहीं है. We will give this immunoglobulin only at risk patient. Cause 5 days के अंदर transmissibility ज़्यादा होती. After 5 days transmissibility less.
तो 5 डेज के अंदर अगर आएगी तो immunoglobulin and vaccine both are important, but after 5 days vaccine is important. And after 5 days we will give this immunoglobulin to whom? Those who cannot take the vaccine, like immunocompromised or pregnant patient, they cannot take this varicella vaccine because they are live attenuated vaccine. तो उस पेशेंट को हम इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो उस पेशेंट को हम इम्यूनोग्लोबुलिन दे सकती है जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, लेकिन 5 दिन के अंदर वैक्सीन करनी है। 5 दिन के बाद 5 दिन के अंदर हमने क्या देना था? इम्यूनोग्लोबुलिन, अगर विद इन 5 डेज आ रहा है। इम्यूनोग्लोबुलिन, हाँ 5 दिन के Okay. अंदर दोनों, both immunoglobulin and the vaccine, varicella vaccine and immunoglobulin both. For a normal patient, if he come within 5 days, we have to give this vaccine and immunoglobulin. And if he come after 5 days, then immunoglobulin का रोल उतना ज्यादा नहीं है, cause transmissibility period already खत्म हो गई, तो that time you can give the vaccine, just the vaccine. सही, ठीक है। आप विद इन 5 डेज इम्यूनोग्लोबुलिन, आफ्टर 5 डेज वैक्सीन, जो वो हाँ, आएगा, क्या नाम है अपना, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड वैक्सीन। normal vaccine, live attenuated vaccine. But if the patient is immunocompromised, then we will have to give the immunoglobulin, not the vaccine. Because आफ्टर live 5 डेज, attenuated vaccine, रिपीट अगेन, क्या कह रही हो? if for immunocompromised, always immunoglobulin, not the vaccine. Immunocompromised, no matter within 5 days or after 5 days, you have to give the immunoglobulin. हाँ, वो तो सही बात है ना, उसको तो देना ही नहीं है ना वैक्सीन, क्योंकि वो वैक्सीन Yeah, बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, लाइव yeah, वैक्सीन है, उसको डिजीज हो जाएगी yeah, उन लोगों के बच्चे को। आगे विद इन 5 डेज yeah. इम्यूनोग्लोबुलिन, आफ्टर 5 डेज वैक्सीन, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ऑलवेज वैक्सीन। ठीक है, रीड करो। अच्छा, और एक इम्पोर्टेंट चीज तो वहाँ पे थी, if infant like less than 1 year, then वो auto resolve हो जाएगी, we don't have to give anything. नहीं नहीं, क्या कह रही हो, फिर से बोलो। If the infant age is less than 1 year, हाँ हाँ, then we don't have to give anything, because वहाँ पे हाँ, immunoglobulin तो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। immunoglobulin auto उसका already transmissibility risk is very low, सीवियर इन्फेक्शन होने का चांस लो है इफ इज लेस देन 1। अच्छा, हाँ सही है, क्योंकि लेस देन 1 एज का होगा तो उसमें फिर वो नहीं है, इतना ट्रांसमिट होने का चांस ही नहीं है। So that's why we don't have to give this immunoglobulin. ठीक है, 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 ठीक है। लेस देन 1 वाले में भी इम्यूनोग्लोबुलिन देना है? नो immunoglobulin नहीं देना, बस कुछ भी नहीं देना? immunoglobulin दे के क्या फायदा, हाँ वो ऑटो हाँ, रिजॉल्व हो जाएगी। चलो आगे पढ़ो। हाँ, अच्छा, which of the following is most likely diagnosis in this patient? 37-year-old man with HIV come to the urgent care clinic due to 2 months of cough. Asha, the cough is productive of sputum, particularly in the early morning, and as well sometimes associated with streak of blood. He drink alcohol and use intravenous illicit drug. The patient was hospitalized 4 months ago due to alcohol withdrawal seizure. Asha, CD4 count at that time was 520. Temperature 37, blood pressure 130/80, pulse 75 and respiration 14. Oxygen saturation 98% on room air. Lung examination revealed crackle and bronchi over the right upper lung field. No cardiac murmur or rash are present. Chest X-ray findings are shown in the image below. Now they are asking, what is the likely diagnosis? Now they are asking what is the likely diagnosis. Okay, a 37-year-old man with HIV comes to the urgent care clinic due to 2 months of cough. Cough is productive of the sputum, particularly in early morning, and is sometimes associated with a streak of blood. He drinks alcohol and uses intravenous illicit drugs. The patient was hospitalized 4 months ago due to alcohol withdrawal seizures. CD4 count at that time was 520 per mm cube.
Temperature is 37.7 degrees centigrade. Blood pressure is 135. 80 millimeters of mercury. Pulse is 72 75 per minute, and respirations are 14 per minute. Oxygen saturation is 98% on room air. Lung examination reveals crackles and rhonchi are present. Chest X-ray findings are shown in the image below. Which are the following the most likely diagnosis for this patient? सोचने दो. क्या अटेम्प्ट करोगी? ये तो pulmonary tuberculosis cause HIV patient CD4 count more than CD4 count almost normal 520 ना तो there is a several parameter 100 200 and 500 तो ये 500 का अंदर पड़ेगी तो 100, and 100, 200, 500 सही. आओ गलत करके देखते हैं कितना मजा आता है. सही कह रही हो बिल्कुल तुम. इसमें माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन होना चाहिए क्योंकि तो ये अपर लोब में था. दिल तो मेरा भी कर रहा था लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया तो मैंने कहा छोड़ो बस. अब अभी चीटिंग नहीं करते. लेकिन बात ये है कि सही कह रही हो बिल्कुल कि इसको एक तो ये उस टाइम पे इसके 520 थे और दूसरा चीज ये था कि उसका जो है वो अपर लोब जो है वो वाजे पड़ा हुआ है. अपर लोब में आपका इरिटेड एरियाज यानी एमटीबी कैविटरी अपाइकल लंग लीजन कैविटरी अपाइकल लंग लीजन कैविटरी अपाइकल लंग लीजन. पेशेंट्स विद एचआईवी हैव अ मच हायर. अच्छा मैंने एस्पिरेशन क्यों किया क्योंकि मुझे ये अल्कोहल की वजह से सीजर वाला सीन थोड़ा बहुत हाँ लग रहा. वो भी इम्पोर्टेंट है अल्कोहल दैट मीन्स वो उसका कोई उस प्रॉपर होम नहीं है ना तो हाँ हाँ जिसके पास प्रॉपर होम नहीं है वो तो टीबी की तरफ जा रही है टीबी इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगी सही बात है. सही बात है. बिल्कुल सही कह रही हो. बिल्कुल सही कह रही हो आपा. एक सेकंड दो मुझे. पढ़ो रीड करो इसको. दिस पेशेंट विद एचआईवी. अच्छा this patient with HIV has chronic cough and cavitary upper lobe lung lesion raising a strong suspicion for reactivation tuberculosis. Most healthy patients exposed to TB never develop symptoms due to generation of granuloma that wall off bacilli and prevent spread latent TB. However, because maintenance of granuloma is dependent on cytokine signaling between CD4 T lymphocyte and macrophage, patients with impaired immunity are at substantially higher risk of TB reactivation than the general population. HIV is particularly associated with TB reactivation 30 to 100-fold increased risk due to virus-mediated immune dysregulation, cytokine signaling abnormality, and CD4 T lymphocyte destruction. So why this reactivation occur? Because of virus-mediated immune dysfunction. Immune dysfunction, cytokine signaling abnormality, and CD4 T lymphocyte destruction. Manifestation of reactivation TB generally include week of progressive fever, weight loss, and cough. The cough is initially minimally productive and greatest in the morning due to pooling of secretion overnight, but eventually become more productive, persistent, and sometimes blood streak. Because Mycobacterium tuberculosis is aerobic, slow-growing organism, it preferentially attacks the upper lobe of the lung where there is a high oxygen tension and slow lymphatic drainage, allowing the organism to accommodate. Chest imaging typically reveals cavitary lesion with surrounding inflammation in the upper pulmonary field. Diagnosis require identification of the organism in a sputum sample. আচ্ছা choice aspiration pneumonia. Aspiration pneumonia can cause cavitary infiltrate and common in those with alcohol or substance use disorder. Most cases occur in the lower lobe, particularly in the अच्छा ये भी और एक important clue. If मुझे याद aspiration है pneumonia, it will occur in कि lower lobe. लॉकडाउन होता है क्योंकि पानी होता है
एस्पिरेशन इज सिंपली फ्लूइड जो नीचे आके गिरता है ग्रेविटी के वजह से। But it can occasionally cause upper lobe lesion due to recombinant aspiration. Acha. A patient typically have several day or a couple of weeks of dyspnea, cough, productive foul smelling sputum and fever. This patient 2-month history of cough associated with hemoptysis and an upper lobe cavitation make TB far more likely, particularly given his HIV status. Acha. Then other two options B and D. Cryptococcal and pneumocystic pneumonia are age-defining illness that typically occur at CD4 count less than 200. This patient had a CD4 count 520. It is highly unlikely that his CD4 count is now low enough to have either opportunistic infection. Furthermore, neither pulmonary infection typically lead to cavitation. Cryptococcus typically cause patchy infiltrate of or nodular lesion, and pneumocystitis usually cause diffuse alveolar infiltrate. Acha. Choice C. Septic emboli can occur in patient with intravenous drug use from thrombophlebitis and cause hemoptysis from pulmonary infection. However, most cases are peripheral and multifocal would be unlikely to cause a single large cavity lesion, and patients are acutely, not chronically ill. Fever, dyspnea due to large burden of the disease. Acha. Educational objective: patient with HIV have a much higher risk of reactivation tuberculosis than the general population. Patients typically have subacute or chronic symptoms, fever, fatigue, cough, weight loss, night sweat, upper lobe cavity lesion are common on chest X-ray. Done. सही बात है, सही बात है, सही बात है। Reactivation ना वो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन का बता रहा है। चलो अच्छा इसकी बात कर रहा है कि वायरस की वजह से क्योंकि इम्यून काम नहीं करेगा तो ग्रेनुलोमा सही से नहीं बनेगा और आपका प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके ओके ओके